हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत। तो आज आउ कि MCQs कंप्यूटर उपर आम देखा। तो स्टार्ट करवा देखा प्रथम क्वेश्चन तुम कौन रही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज OCR, सेकंड OMR, थर्ड MICR, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज OCR। OCR फुल फॉर्म होची ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR फुल फॉर्म ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, MICR फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन OCR। The output quality of a printer is measured by dash. Output quality of a printer is measured by dash. First option is dot per inch, second dot per square inch, third dots printed per unit time, fourth all of the above. Right answer is dot per square inch. Printed is quality of printed is measured by dot per square inch. B option is right answer. In analog computer, input is first converted to digital computer. First option. Second option is input is never converted to digital form. Third option, output is displayed in digital form. Fourth option, all of the above. In analog computer, input is never converted to digital computer. B option is right answer. In latest generation computer, the instructions are executed dash. First option is parallel only, second sequentially only, third both sequentially and parallel, fourth all of the above. Right answer is both sequentially and parallel. Next, who designed the first electronic computer? ENIAC. तो ये दुईटा क्वेश्चन आसूची। फास्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर ना कौन मन रखिए सेटा ENIAC. ENIAC इज फास्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर। तो तार इन्वेंशन किए करथिले, इन्वेंटर किए? तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, एकार्ट एंड मार्कले। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज रही तार इन्वेंशन किए करथिले? डेनिस एम रिचार्ड। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, डेनिस एम रिचार्ड। पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। तो जो लोक कंप्यूटर डिजाइन करती, प्रोग्राम भी सेट करती, माने जो कंप्यूटर इक्विपमेंट को मध्य ऑपरेट करती, मेंटेन करती, तो ताकू कौन कहा जाए? तो राइट आंसर इज पीपल वेयर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। When did arch rival IBM and Apple Computers INC decide to join hands? तो राइट आंसर इज 1991। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। IBM गोटे कंपनी, एप्पल गोटे कंपनी, तो केतेबेले से माने मिसिकी कंप्यूटर स्टार्ट करथिले तयारी करबा 1991 मसिया रे। Human beings are referred to as Homo sapiens. Which device is called Silico sapiens? तो राइट आंसर इज कंप्यूटर। डी ऑप्शन कंप्यूटर इज राइट आंसर। तो सिलिकन से आईसी चिप व्यवहार करा जाउची, तुम जानिଛ, तो सेति कहा जाए ताको सिलिकन सापियंस। मन रखियो। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग. व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट? फर्स्ट ऑप्शन लीच, सेकंड स्क्विड, थर्ड स्लग, फोर्थ ग्लिच। तो राइट आंसर इज ग्लिच। लीच, स्क्विड, स्लग एगुड़ा गोटे गोटे एनिमल ना, किंतु ग्लिच होची गोटे किछि भूल जदि रही जाउची कंप्यूटर रे ताको ग्लिच मध्य कहा जाय, किछि फॉल्ट जदि रहउची, तो सेति पय डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर very reliable but they are not dash. First option is fast, second powerful, third infallible, fourth cheap. तो राइट आंसर इज चीप। सस्ता नुहे, এটা হবনি, এটা ঠিক ম্যারেজ মানে এটা ভাবিবনি তুমি। ইনফলিবল মানে যে ভুল করে না। তো মডার্ন কম্পিউটারটা ভুল করে কি? ভুল করে না, এটা ভুল রে মারি দিয়া হইছে, এটা তুমি দেখিবনি। যেটা মু কହୁছি সেটা দেখো। চিপ, চিপটা হচ্ছে রাইট আনসার। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিসপ্লে ফিচার দ্যাট হাইলাইটস এরিয়া অফ দ্য স্ক্রিন হুইচ রিকোয়ার্স অপারেটর অ্যাকশন? সেটা এরিয়া হব। তো রাইট আনসার ইজ রিভার্স ভিডিও। পার্সোনাল কম্পিউটার্স ইউজ এ নম্বর অফ চিপস মাউন্টেড অন এ মেন সার্কিট बोर्ड. হোয়াট ইজ দ্য কমন নেম অফ সচ बोर्ड? तो विभिन्न प्रकार चिप गोटे बोर्ड ही लगिक रही है कंप्यूटर भितर, तो सही बोर्डर ना कौन? मदर बोर्ड। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइव, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड? तो सब जिनस गोटे बोर्ड लगिक रही है कंप्यूटर, तो सेटा होची मदर बोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? फर्स्ट ऑप्शन which is used by one person only. Second option, which is assigned one and only one task. Third, which used one kind of software. Fourth, which is meant for application software. तो क्वेश्चन पचार डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या कहुए, तार अर्थ कौन? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, which is assigned one and only one task. नेक्स्ट देखो, The system unit of a personal computer typically contains all of the following except
dash. First option is microprocessor, second disk controller, third serial interface, fourth modem. तो क्वेश्चन कौन थिला? The system unit of a personal computer typically contains all the following except dash. तो modem टा से माने पर्सनल कंप्यूटर रे न थाए एक्सेप्ट मॉडम. तो नेक्स्ट देखो, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश. फर्स्ट ऑप्शन इंटरप्रिटर, सेकंड साइमुलेटर, थर्ड कंपाइलर, फोर्थ कमांडर. तो राइट आंसर इज कंपाइलर. तो सब गुड़ा को देछि एंटायर प्रोग्राम, तो सेति में कंपाइलर हबो. तो नेक्स्ट देखो, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश. जदि वन प्रोग्राम देइथिबो तबे सेटा इंटरप्रिटर हबो. गोटे प्रोग्राम को जदि कन्वर्ट करूची इंटरप्रिटर, जदि होल टोटल एंटायर प्रोग्राम को करूची तबे कंपाइलर. मन रखिबाटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेति में कहि देली. तो एठी राइट आंसर रहिबो फर्स्ट ऑप्शन इंटरप्रिटर. नेक्स्ट देखो, ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट ए डैश. तो फर्स्ट ऑप्शन कंप्यूटर, सेकंड माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड प्रोग्रामेबल, फोर्थ सेंसर. राइट आंसर इज डी ऑप्शन सेंसर. TET is a bistable electronic circuit that has dash multi-vibrator, flip-flop, logic gates, latent. The right answer is flip-flop. B option right answer. Unwanted repetition messages such as unsolicited bulk email is known as dash. तो बारंबार जदि जड़े मेसेज दौची तो ताको आम स्पैम करुची बोली कही था, तो सेटा राइट आंसर रहिबो स्पैम. रिपीटेड मेसेज जदि आसुची तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर. DOC स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर. हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चीफ किए? बिल गेट. मन रखिबाटा बी ऑप्शन इज राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर एंड एनी ऑफ दिस. तो कार्ड रीडर भी गोटे इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी गोटे, माउस भी गोटे. तो एनी ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस एठी था. डी ऑप्शन इज राइट आंसर. एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर स्क्रीनर, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. आउटपुट डिवाइस आर स्क्रीनर, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दिस. डी ऑप्शन इज राइट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. The right answer is CPU, Central Processing Unit is known as brain of computer. B option is right answer. IBM stands for dash. IBM stands for Internal Business Management, first option. Internal Business Management, second option. International Business Machine, third option. Fourth, Internal Business Machine. The right answer is International Business Machine. C option is right answer. IBM stands for International Business Machine. Dash translates and execute program at run time line by line. तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंपाइलर, सेकंड इंटरप्रिटर, थर्ड लिंकर, फोर्थ लोडर. तो राइट आंसर इज इंटरप्रिटर. ट्रांसलेट कथा देइछि डैश ट्रांसलेट, इंटरप्रिटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन. तो राइट आंसर इज इंटरप्रिटर. इज एन OPP प्रिंसिपल डैश. OPP प्रिंसिपल इज एन डैश. तो इनहेरिटेंस. सी ऑप्शन इज राइट आंसर. कबल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लिकेशंस. तो कौथिपाई कबल व्यवहार करा जाए. कबल गोटे लैंग्वेज, तो कौथिपाई व्यवहार करा जाए. कमर्शियल पर्पज रे व्यवहार करा जाए, बिजनेस पाई व्यवहार करा जाए. तो कबल फुल फॉर्म जानिछो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो कमर्शियल पर्पज रे व्यवहार करा जाए. ए ऑप्शन इज राइट आंसर. RAM स्टैंड्स फॉर डैश. रैंडम ओरिजिन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, read only memory, random access memory. Right answer is random access memory. D option is right answer. 1 byte equal to dash. 8 bit, 4 bit, 2 bit, 9 bit. Right answer is 8 bit. First option is right answer. SMPS stands for dash. SMPS stands for switched mode power supply. A option is right answer. Switched mode power supply. The device used to carry digital data on analog lines is called dash. भलरे पढ़ो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन. द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड डैश. तो डिजिटल डाटा को माने एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा रे कन्वर्ट करिवारे किए सहाय्य करे. फर्स्ट ऑप्शन इज मॉडम, सेकंड मल्टीप्लेक्सर, थर्ड मॉड्यूलेटर, फोर्थ डीमॉड्यूलेटर. तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन मॉडम. VDU इज आल्सो कॉल्ड डैश. फर्स्ट ऑप्शन स्क्रीन, सेकंड मॉनिटर, थर्ड both screen and monitor, fourth printer. The right answer is both screen and
मॉनिटर। तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट हूँ वीडियो फुल फॉर्म। तो बोथ स्क्रीन आउ मॉनिटर ये राइट आंसर रहिबो। बायोस स्टैंड्स फॉर डैश। बायोस हूँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो फादर किए आम ऊपर करूँ यहाँ। तो रिचाई मन रखियो रिचाई डेनिस रिचाई फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। The instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as computer dash. The instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as computers dash. तो referred to as computers program. तो program जमीती instruction दबो computer से गुड़ा काम करिवो। तो right answer is program। तो आज आम 40टा क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कलु सब गुड़ा इंपोर्टेंट रहिबो। टिके भल भाबे देखि दबो। जदि वीडियो भल लागे चैनल को सब्सक्राइब करियो। थैंक यू।